Okay, now today is 11th of December. We're starting the new class with a new chapter. That's chapter number 3, and it says decimal numbers, right? Now, what we are going to do is to understand what are decimal numbers. I think everyone knows what are decimal numbers exactly. Yes? जी पता है आप लोगों को what are decimal numbers? Okay, so in this numbers, we need to understand there are two types of decimal numbers, right? One is terminating decimal numbers, and the other one is non-terminating decimal number. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, किसी को पता है कि डेसिमल नंबर सॉरी नॉट टर्मिनेटिंग हाँ जी बिल्कुल लिखिएगा. फर्स्ट टेल मी कि डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? यस सर मुझे पता. क्या पता बताओ भाई. बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. दिस इज रियली नाइस. सर टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें डिवीजन ना खत्म हो जाए आके, ओके. जिसमें रिमाइंडर ना बचे. और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें क्या नाम है डिवीजन में वो बच जाए, क्या कहते हैं, रिमाइंडर बच जाए सर, और वो खींचते चला जाए आगे की तरफ. जैसे एक वेरी एग्जांपल गुड. मुझे आ नहीं रही है. इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो दे हैव फाइनाइट decimal places, right? This one has infinite decimal places, right? बात समझ आ रही है? यस. जैसा अभी मोहम्मद रजा ने हमें बताया कि the ones which has the number of decimal places while we are dividing the fraction or any two numbers, and it has no remainder left at some point. So that type of numbers are called terminating decimal numbers, and the other one which has the number remainder left every time, it is called नॉन टर्मिनेटिंग. अच्छा. इसको आसान इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिनकी डेसिमल प्लेसेस फाइनाइट है वो टर्मिनेटिंग है, और जिनकी डेसिमल प्लेसेस इनफाइनाइट है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है. आर वी गुड टिल हियर? यस सर. ठीक है जनाब. अच्छा जी. So now that's what you need to understand before starting the exercise. So we can easily start the exercise over here. सर Right? चैप्टर का नाम बताइएगा. चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 3 डेसिमल नंबर्स. ओके सर. Can you see my board? Hiba, are you taking the class
for with 7M. Yes, Hiba, you are in 7O, right? Why are you taking classes with 7M? Sorry, girl, I have to remove you. I've been asking you. Okay, G. Anyone has any issues with this? Okay, that's great. That's a no, right? Let's start with question number. Question number 1, part 1, right? They ask you to express Yes, sir. 12 upon 24 in decimal, right? So 12 upon 24 को क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, right? 12 ones are 12 and 12 twos are 24. So we are good with 1 upon 2, right? Any confusion? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. What we are going to do is express it into decimal number. Always the denominator comes out in the box the division. जी क्या करेंगे अब इसको? सर पॉइंट लगेगा, जीरो लगेगा, फिर 2 5s are 10, 0.5. Point लगेगा. With the point we got 0 over here, right? And 2 5s are 10, and we got your answer. So 0 upon 2, oh sorry, 1 upon 2 or 12 upon 24 is 0.5. This is your answer. ठीक है जनाब? Yes, sir. Similarly, what we are going to do with question number 1, part 2, it says the decimal equivalent of 23%. ये होगा 23/100. Very good. इसको To change into decimal, first I have to change the percentage or remove the percentage. Whenever I am removing the percentage, that means I am dividing it by 100. The removal of percentage is by dividing 100, right? Acha ji. Ab, these kind of divisions are very easy without doing the box division. We can easily do that. How many number of zeros are here? 2. 2. Okay. Can I write it down like this? 23.0, right? 23 can be written like this. There's always a decimal point after a number which we don't write. ऐसा ही है? Yes, sir. And how many zeros Yes, we have? sir. As I just asked you, you just answer it. So the decimal will move 2 places backwards and come over here. Okay? And this will become 0.23. G. सर नीचे का नजर नहीं आ रहा. अब नजर आ रहे हैं? सर नो थोड़ा सर सा अभी भी नहीं आ रहा. हमको नजर आ रहा है 23, मुझे तो नजर आ रहा है अपने स्क्रीन पे. Why can't you see that? सर बस 23 तक नजर आ रहा है, उसके नीचे का नजर नहीं आ रहा. 2, 3 है 20. आंसर लिखा हुआ है ना, ये वो भी नहीं नजर आ रहा.
बस सर सही है. ठीक है जनाब. Yes sir. Okay, so are we good till here? किसी को कोई issue? So there is no need to do the box division in when we are having multiple of 10, right? So we can easily just move the number of places of decimal towards the left while it's dividing, or multiplying to the right if it's multiplying. Are we good till here? जी किसी को कोई मसला है यहाँ तक? No, sir. Now part 3. Part 3 they asked you the percentage equivalent of 0.4. अब 0.4 का percentage equivalency किस तरह होगा? सर इसका होगा 4/100. 4/100. 4/100. Whenever we wanted to express any number or decimal, even a decimal or any number, so what we do, we multiply that number with 100. 4/10. Right? As I was been telling you in previous question that we need to just move the decimal places and according to the number of zeros I have in the multiple of 10. Right? How many number of zeros are over here? Yes. अच्छा सर, अगर परसेंटेज में लाना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर परसेंटेज से हटाना हो तो हम डिवाइड करेंगे. बिल्कुल. तो अब हमारे पास दो जीरोस यहाँ पर मूव कराने, हमें दो डेसिमल प्लेसेस, एज वी हैव टू जीरोस ओवर हियर, राइट? सो आई विल मूव माय डेसिमल टू प्लेसेस एंड आई डोंट हैव प्लेस, so I'll make a zero over here, so this will become 40, right? And the sign of the percentage. Are we good till here? Yes sir. Any issues? No sir. Manahil, how are you? नहीं समझ में आया ये वाला. अच्छा फिर से समझाता हूँ, एक मिनट. Manahil, can you hear me? Okay, Manahil is not responding. Alize. Alize. जी सर. How are you, Alize? I'm fine sir, मैं ठीक हूँ. Alhamdulillah, doing good. So is there any confusion, Alize, in this topic up till now? Yes sir. Are we going good? Sir. Okay. Now, what we are going to do is, सर ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ है. जी बेटा परसेंटेज का साइन है. हाँ जी राबिया, आपको क्या समझ नहीं आया बेटा? अब नाउ यू कैन आस्क मी. यू आर आस्किंग मी समथिंग. सर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया. Question number 3 says express 0.4 into percentage. 0.4 को percentage में convert करने के लिए what we have to do is we have to multiply it with 100%, right? बात समझ आ रही है? And when I am multiplying any number Yes sir. 100, ऐसे जैसे हमने division करी थी, what we have done is we move 2 places backward. Now I have to move 2 places forward as there are 2 zeros, and as I don't have any number over here, so I'll put a 0. अब समझ आया? Yes. सर ये 100 से मल्टीप्लाई करने 100 के 2 0 का अंदर. 2 zeros decimal places move कर गए ना. This will give you 40. समझ आई अब? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक लॉन्ग डिवीजन करके इसको क्लियर कर लें अपने पास. बात समझ आ रही है राबिया? आप लॉन्ग डिवीजन करें 0.4 और 100 का, देखिए क्या आंसर आता है.
अप्लाई कर दिया। सही आ रहा है आंसर? जी, क्या करें फिर अब? Okay, Janab. So what we are going to do now, we are going to do the next question. This is very interesting one. ये जरा जरा सही से समझिएगा. Question number 1 part 4. सर इसका आंसर कहाँ है? This is your answer, beta. 40% is your answer. 0.4 in percentage is 40%. समझ आई बात? यस सर. Now, what we are supposed to be doing over here is we need to transform 2.19 into fractions now. किस तरह से होगा अभी? किसी को कोई अंदाजा? ये बहुत इजी है. 2.1 लगा, फिर ये 2 नंबर है तो 219 अपॉन 100 है इसका. अब डिवाइड हो. वेरी गुड, वेरी गुड. सो हम किस तरह करेंगे कि 2.19. अब हमारे पास कितने जीरोस हैं? हमने 1 लगा दिया क्योंकि डिवीजन में 1 आ सकता है, राइट? यस. So when I am moving my point, I am putting a zero. एक point हटाया, दूसरा point हटाया, तो दूसरा zero. So the final answer will be 219 upon 100. This is your answer. जी, किसी को confusion इसमें? Is everyone done with question number 1? जी, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया आप लोगों ने? यस सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 सही है, ठीक है, ताकि होमवर्क भी लिख दें आप लोगों का. Guys, kindly switch off your mics when you are not talking for the class, okay? Now, question number 5. Can everyone read question number 5? It's 4.555 is dash decimal. Okay. Now, what kind of decimal it is? G. Yes, Taha. What kind of decimal this is? सर मतलब इसमें क्या करना होगा? आपने बताना है what kind of decimal it is. It is a dash decimal. It is a dash. किस टाइप का डेसिमल है ये भाई? किस टाइप का डेसिमल है? Sir, it is not terminating decimal number. Why it is non terminating, Rabia? सर फाइनाइट है शायद. चले जा रहे ये क्योंकि मैंने सिर्फ 4 प्लेसेस लिखी हैं. दिस शोज कि ये और आगे प्लेसेस. दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, क्लियर है सबको? ओके सर.
Any issues Yes, with sir. this? सर थोड़ा कैमरा उधर कर लें, नजर नहीं आ रहा। इधर कर लो भाई, पूरा कैमरे में है, आई कैन सी। सर लेफ्ट साइड पे थोड़ा। What you can't see? Can you see my finger? ये आपको नजर आ रहा यस है? सर। बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। Do question number 2 all the parts. Part 1. Okay, this is your long weekend. Na? You guys are going to get the class afterwards. So you can do question number 3 also of exercise 3. अच्छा जी, अब आपने जरा ये देख लीजिए guys, is there any confusion? सर ये तो आपने करवाया भी हुआ है ना? अच्छा, इसी को कॉपी में करना है सही से। Make sure you will mention the classwork and homework properly and then do your work. Okay, now is there any confusion guys? नो सर। मसला चलें जी, that's it for today.